गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज के डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है उसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन और 111 से लेके सेक्शन 133 तक। ठीक है। सेक्शन 111 से लेके हम लोग सेक्शन 133 तक 133 तक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा जो प्रैक्टिस होगा, यूजुअली हम लोग करते क्या है कि वी डिस्कस न्यूमरस ऑफ एमसीक्यूज और एमसीक्यूज से ही हम कंसेप्ट का भी डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 है वो किसके बारे में बात करता है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, ऑप्शन सी प्रिजम्पशन ऑफ डेथ एंड ऑप्शन डी प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? जब भी हम बात करते हैं सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज या फिर प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी? किसके बारे में बात कर रहा है? हाँ जी, बताइए। देखिए, अगर आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो ये शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में फॉल करता है। तो बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी। सो इट विल बी प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, राइट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी का जो कंसेप्ट है वो काम कैसे करता है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर कोई भी चाइल्ड होता है, इफ एनी पर्टिकुलर चाइल्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड दैट चाइल्ड हैज बीन बोर्न, ठीक है, दैट चाइल्ड हैज बीन बोर्न विद इन द टाइम पीरियड ऑफ मैरिज, विद इन द टाइम पीरियड ऑफ मैरिज और विद इन 280 days ऑफ मैरिज। तो लाइक विद इन 280 days ऑफ मैरिज मीन्स विद इन 280 days ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये जो बच्चा है वो लीगल चाइल्ड है, लेजिटिमेट चाइल्ड है ऑफ दैट हस्बैंड एंड वाइफ जिनकी रिलेशनशिप या जिनकी मैरिज हैज कम टू एन एंड 280 days बिफोर। इज इट क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 112 of Indian Evidence Act contains a presumption of fact, a presumption of a rebuttable presumption of law, uh, irrebuttable presumption of law, and option D, a mixed presumption of fact and law. What should be the correct answer? सेक्शन 112 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन जो 112 है वो किसके बारे में बात करता है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के बारे में, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में, इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में, एंड अ मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ बोथ। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हाँ जी। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एन इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इट इज अ वेरी क्लियर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कि इफ एनी चाइल्ड बॉर्न्स विद इन 280 days ऑफ मैरिज तो इट शैल बी अज्यूम दैट द चाइल्ड वॉज लीगलाइज्ड। तो ये क्या हो गया आपका? एन इररिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है। सो दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रेज्ड। जो सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अंदर जो प्रिजम्पशन है वो कब रेज होता है? व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज, ऑप्शन बी व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न विद इन 280 days ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, ऑप्शन
C both A and B, and option D only A not B. What should be the correct answer? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। Presumption under section 112 of Indian Evidence Act is raised when the child is born during continuance of marriage, when the child is born within 280 days of dissolution of marriage and the mother remaining unmarried, both A and B, and only A not B. So its correct answer will be your option C. Next question, question number 4. In cases where the child is born within 280 days of dissolution of marriage and the mother remain unmarried, the presumption of legitimacy of child under section 112 arises if the father is alive on the day the child is born, if the father is not alive on the day the child is born, irrespective of whether father is alive or not alive on the day child is born, and option D either A or B. What should be the correct answer? अब देखिए, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फोर्थ वाला। इन द केसेस वेयर द चाइल्ड इज बोर्न विद इन 280 डेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, ठीक है, द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड अंडर सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अराइजेस अंडर ऑप्शन सी, दैट इज irrespective of whether the father is alive or dead on the day on which the child was born. Next question, question number 5. Under section 112 of Indian Evidence Act, where there is a dispute regarding section 112 कहाँ पे apply होता है? Where there is a dispute regarding maternity of child, paternity of child, both A and B, either A or B. तो ये एक obvious question है कि सेक्शन 112 बात कर रहा है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में। अब चाइल्ड की मदर कौन है, दैट इज वेरी मच क्लियर। सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। तो जब भी चाइल्ड के फादर की लेजिटिमेसी को प्रूव करना हो, देन पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड should be taken into consideration, and as per that B is the correct answer. Moving towards next question, question number 6. The deciding factor under section 112 of Indian Evidence Act is the date of the birth of child, the date of conception of child, the date of the conception depending on the facts and circumstances, only B not A. सेक्शन 112 के अंदर क्या डिसाइडिंग फैक्टर है? कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड डिसाइडिंग फैक्टर है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड डिसाइडिंग फैक्टर है, द डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ कंसेप्शन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस डिसाइडिंग फैक्टर है, ओनली बी नॉट ए। तो ये बहुत क्लियर है दैट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड इज अ डिसाइडिंग फैक्टर अंडर सेक्शन 112, क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा है दैट द चाइल्ड बोर्न, not they are stating child conceived. Born word use हुआ है, so the correct answer will be option A. Moving towards question number 7. Section 114 of Indian Evidence Act provides for certain presumption of facts, rebuttable presumption of law, irrebuttable presumption of law, presumption of fact and presumption of law both. Question number 7. What should be the correct answer? Section 114 जो बात कर रहा है, जिसमें आपका ये बोला गया है कि द अकम्प्लिश्ड का स्टेटमेंट कैन नॉट बी सोली रिलाइड अपॉन टू मेक कन्विक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। देन मूविंग अहेड, इट इज टॉकिंग अबाउट इफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी हैज डन समथिंग, सो दे हैव डन इट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। इफ अ पर्सन इज लाइक ओनिंग अ प्रॉपर्टी, सो ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी अनटिल एंड अनलेस दैट वाज पोजेशन हैज बीन प्रूव्ड। तो ये सारे के सारे प्रिजम्पशन 114 के अंदर हैं। तो ये क्या है? ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, बोथ प्रिजम्पशन एंड लॉ एंड प्रिजम्पशन एंड फैक्ट है, एंड रिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है या इररिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? जी ट्राई करें, गलत होता है कोई बात नहीं। So its correct answer will be option A, that is presumption of fact. Question number 8. An accomplish is, accomplish कौन होता है? Not a competent witness against the accused, a competent witness against the
accused cannot be a competent witness against the accused? D, either A or C. What should be the correct answer? And accomplish as per section 114, as per section 114 को क्या है? So its correct answer will be option A, that he is not a competent witness against the accused. Moving towards next question. Presumption is, question number 9. Presumption is an evidence, is a proof, show to whom the burden of proof lies, and D, all of the above. Presumption is an evidence, is a proof, shows to whom the burden of proof lies, and all of the above. What should be the correct answer? देखिए, अब जनरली हम किसी भी प्रिजम्पशन की बात करते हैं तो जब कोर्ट एक चीज प्रिज्यूम कर लेगा तो द सेकंड फैक्ट हैज टू बी प्रूव्ड. Suppose the court proved that I haven't committed the theft. So now the presumption shall lie on the next party to show, like the next party has to prove that I have committed theft. So it is related to showing on whom the burden of proof lies. So C is the correct answer. Right? Moving towards next question. Question number 10. Presumption as to abatement of suicide by a married woman has been provided. Abatement of suicide by a married woman बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है. इवन मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 112, 113A, 113B, सेक्शन 114 और 114A, इन 5 सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. मतलब प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से बनने ही बनने हैं. तो presumption as to abatement of suicide is provided under which section? Question number 10. What should be the correct answer? Its correct answer is section 113A. So B is the correct answer. ये index based question है. Next question, question number 11. Presumption under section 113A of Indian Evidence Act can be raised if suicide by the married women is committed within 7 years of marriage, within 5 years of marriage, within 3 years of marriage, within 1 year of marriage. What should be the correct answer? Question number 11. ट्राई कीजिए, गलत होता है कोई बात नहीं. What should be the correct answer? Presumption under section 113A of Indian Evidence Act can be raised if the suicide by the married women is committed. Option A, within 7 years of marriage. Option B, within 5 years of marriage. Option C, within 3 years of marriage. Option D, within 1 year of marriage. क्या होगा 11th का करेक्ट आंसर बताइए. Its correct answer will be option A, that is within 7 years of her marriage. Next question. Presumption as to dowry death is contained under which of the following section of Indian Evidence Act? Presumption as to dowry death is contained under which of the following section of Indian Evidence Act? देखिए, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड हमारा दिया हुआ है 113 में. तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता. सेक्शन 113 इज नॉट इन यूज, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. So the left option is section 113B. So C is the correct answer. Section 113B is talking about presumption as to dowry death. Moving towards next question. Presumption under section 114 of Indian Evidence Act can be raised having regard to the common course of natural events, human conduct, private and public businesses. D, all of the above. What should be the correct answer? Presumption under section 114 of Indian Evidence Act. Presumption under section 114 of Indian Evidence Act can be raised having regard to the common course of
Natural events, human conduct, public and private businesses, D, all of the above. What should be the correct answer? तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल इज कंटेन्ड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 112, 13, 14 एंड 15. 15, 14, 13 एंड 12. डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल. अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एविडेंस एक्ट का. जी, क्या होगा इसका? तो ये जो एस्टॉपल का आइडिया है ये सेक्शन 115 से लेके 118 तक कंटेन्ड है. अब चूंकि 115 से 18 के बीच का एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. राइट. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 15. Doctrine of estoppel is a substantive law, rule of equity, rule of evidence, law of pleading. जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल है ये कौन सा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है, लॉ ऑफ इक्विटी है, रूल ऑफ एविडेंस है, या फिर रूल ऑफ प्लीडिंग है? एक्सक्यूज मी. डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल इज अ substantive law, rule of equity, rule of evidence, या फिर law of pleading. What should be the correct answer? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए. Its correct answer is rule of evidence. ठीक है, because it's contained under Indian Evidence Act. It is talking about non-giving of evidence in certain cases where the estoppel has been applied. So it is a rule of evidence. So 15th का correct answer will be option C. Estoppel are binding. Estoppel किस पे binding होते हैं? Upon litigating parties, option A. Option B, upon privies of the litigating party. Option C, upon a stranger to the litigation. Upon a stranger to the litigating parties. And option D, both A and B only. Question number 16. What should be the correct answer? So basically, either the parties or their privies. Privies means anyone who is relying on the parties and continuing the suit. ठीक है, और who are the part of that particular transaction. उन पे ये अप्लाई होता है, strangers पे अप्लाई नहीं होता है. So its correct answer will be D. Question number 17. Estoppel is a rule of civil action, criminal action, both civil and criminal action. Only B, not A. What should be the correct answer? Rule estoppel is a rule of civil action, criminal action, both civil and criminal action. D is saying only B, not A. So it is a rule of civil action. Civil action. So its correct answer will be A. क्यों होगा civil action? If we will read section 116, 17, ठीक है, so there we will come to know कि estoppel जो लग रहा है वो किन पे लग रहा है. Estoppel is applying only on the parties who are going for any kind of property matter, and property matters are dealt under civil actions. So estoppel is a rule of civil action. Is it clear? Next, estoppel can be by matter of record resulting from the judgment of a competent court, by deed resulting from entering into a solemn agreement, solemn engagement as to certain facts, by bias arising from the agreement or contract or from act or conduct of misrepresentation, and option D, all of the above. तो estoppel can be, estoppel किन किन पे applicable हो सकता है? अगर मैटर ऑफ रिकॉर्ड, लाइक अगर कोई कोर्ट जजमेंट पास करता है तो उस पे एस्टॉपल चलेगा. दूसरा बोल रहा है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है या एंगेजमेंट हुआ है ड्यू टू एनी डीड,
ठीक है। तीसरा बोल रहा है अगर कोई भी एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है विच हैज बीन फॉर्म थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन रिजल्टिंग चेंज इन पोजीशन, तो इन सब पे ही आपका एस्टॉपल लगता है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एस्टॉपल in section 115 of Indian Evidence Act is an estoppel by record. Option B is an estoppel by deed. Option C is an estoppel by pious or PS, and option D all of the above. अब देखिए, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट किया है तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन भी इस पे ही बेस्ड था। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? जल्दी से बताइए। Its correct answer will be all of the above, right? So, the estoppel under section 115 of Indian Evidence Act, ठीक है, its correct answer will be all of the above. Question number 20. In which of the following there is no estoppel? Option A, on a point of law. Option B, against the statute. Option C, attestation of a deed. And option D, all of the above. किस केस में एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होगा? अच्छा सॉरी, 119 जो 19 क्वेश्चन है वो सेक्शन 115 के बारे में बात कर रहा है। तो एस्टॉपल ऑन रिकॉर्ड जो है हमारा वो सेक्शन 41 में दिया हुआ है। एस्टॉपल बाय डीड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, और एस्टॉपल बाय पीएस दिया हुआ है सेक्शन 115 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो एस्टॉपल ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ, अगेंस्ट अ स्टैट्यूट, अटेस्टेशन ऑफ अ डीड, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एस्टॉपल किस पे नहीं लगता है? सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ। लॉ के पॉइंट पे कोई भी एस्टॉपल नहीं लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 21। एस्टॉपल कैन बी बाय साइलेंस, बाय नेग्लिजेंस, बाय इलेक्शन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एस्टॉपल किससे आ सकता है? साइलेंस से, इलेक्शन से, नेग्लिजेंस से, या ऑल ऑफ द अबव से? तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बाय इलेक्शन। एस्टॉपल कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इलेक्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Estoppel deals with question of fact, question of right, both A and B, and neither A nor B. Estoppel क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? एस्टॉपल किससे डील करता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, क्वेश्चन ऑफ राइट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, एस्टॉपल डील्स विथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ओनली, नॉट विथ लॉ और राइट। So its correct answer will be option A. Question number 23. Estoppel is a cause of action in itself. Create a cause of action. Option C, both A and B are correct. Option D, neither A nor B are correct. Estoppel is a cause of action in itself. Create a cause of action. C, both A and B are correct. And option D, neither A nor B is correct. What should be the correct answer? Estoppel is a cause of action in itself. Create a cause of action, both A and B, neither A nor B. What should be the correct answer?
So estoppel creates a cause of action in itself. ठीक है, create a cause of action or it is a cause of action in itself, both A and B and none of the above. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए 23 का, देन ओनली वी शैल मूव अहेड। एक बार जल्दी से देखिए इसको। Its correct answer will be option A. So it is a cause of action in itself. Estoppel. Option A should be specifically pleaded, need not to be specifically pleaded. C may or may not be specifically pleaded. D both B and C are correct. तो ये जो रूल ऑफ एस्टॉपल है दैट हैज टू बी स्पेसिफिकली प्लीडेड एज पर सेक्शन 115. So its correct answer will be again option A. Question number 25. Rule of estoppel of tenant and the license of a person in possession is contained in section 116, 17, 18, 19. What should be the correct answer? Rule of estoppel of tenant is contained in which section? Tenant and licensee is contained in which section? 116, 17, 18, 19. What should be the correct answer? It is contained in section 116. Index based question hai. So its correct answer will be option A. Next question. Estoppel operates in case of tenant, option A, during the continuance of tenancy, who remain in possession after the termination of tenancy by notice to quit. Option C, both A and B. Option D, only A and not B. जो एस्टॉपल है वो अगेंस्ट द टेनेंट कब एप्लीकेबल होता है? जबकि टेनेंसी चल रही हो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि after the notice of termination or like notice of termination of tenancy and the notice of quit has been given, but still the tenant continues the possession. Option C, both A and B, and option D, only A, not B. So its correct answer will be option C, that is only A, not B. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बोल रहा है? एस्टॉपल अंडर सेक्शन 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द टेनेंट इज estopped from denying the title of the property of the landlord, from denying the title of the property of actual owner, both A and B, and D बोल रहा है only B, not A. क्वेश्चन नंबर 27, what should be the correct answer? बताइए जल्दी से। Its correct answer is A, that is from denying the title of the property of the landlord. So the person who has given that land to the tenant on tenancy, he cannot deny the title of his landlord. ठीक है? But he can deny the title of actual owner under section 116. Question number 28. A tenant or licensee under section 116 of Indian Evidence Act is stopped from denying the title of landlord during the continuance of tenancy, after the creation of tenancy or license, after the surrender of possession under tenancy or license. Option D, all of the above. 28 easy question है, बनना चाहिए। A tenant or licensee under section 116 of Indian Evidence Act, a tenant or licensee under section 116 of Indian Evidence Act is empowered from denying the title of landlord during the continuance of tenancy, after the creation of tenancy or license, C, after the surrender of possession under tenancy or license, and option D, all of the above.
So its correct answer will be option A, that is during the continuance of tenancy. Once the tenancy has expired or has not begun, they can deny the title of landlord. Question number 29. Under section 118, who among us the following are competent witness? Under section 118, who among us the following are competent witness? Child, accused, lunatic, all of the above. कौन है जो competent witness होता है? Child, lunatic, accused, all of the above. What should be the correct answer? देखिए, an accused person can be the witness, a child can be the witness, a lunatic when he is in sound state can be the witness. So its correct answer will be D, all of the above. Next, a person is competent to testify if he understands the question put to him. Option B, if he is able to give rational awareness to those questions. Option C, both A and B. Option D, if only A, not B. What should be the correct answer? A person can be testified as a witness, is competent to testify as a witness if he understands the question put before him, if he is able to give rational awareness, नहीं answer होगा ये, rational answer to those questions, both A and B, and only A, not B. What should be the correct answer? So its correct answer is option C. He should have the capacity to understand the nature of the question, as well as he should have the capacity to give rational answer of those questions. Next question, question number 31. A dumb person is a competent witness as provided under Section 18 of Indian Evidence Act, Section 119 of Indian Evidence Act, Section 120 of Indian Evidence Act, and Section 121 of Indian Evidence Act. A dumb person is a competent witness as provided under Section 119, 120, 118, 119, 120, and 121. What should be the correct answer? Question number 31. Haji. So this thing is given under Section 119. The person who is unable to speak, okay, can be a competent witness. Now, moving next. Husband and wife both are competent witness against each other in civil proceeding, in criminal proceeding, in both civil and criminal proceeding, neither in civil nor in criminal proceeding. What should be the correct answer? Husband and wife both are competent witness for and against each other in civil proceeding, in criminal proceeding, in both civil and criminal proceeding, neither in civil nor in criminal proceeding. What should be the correct answer? What should be the correct answer? हाँ जी, जल्दी से बताइए. What should be the correct answer? Husband and wife both are competent witness for and against each other in civil proceedings, in criminal proceedings, in both civil and criminal proceedings, neither in civil nor in criminal proceedings. What should be the correct answer? Yes, so they both are competent witness to each other in both civil and criminal proceeding. Next question. Section 121 of Indian Evidence Act provides for privilege in respect of husband and wife, judges and magistrate, affairs of the state, official communication. Again, question number 33 is an index-based question. Okay. So 121 is a very important section which is talking about the privilege communication between
husband and wife, judges and magistrate, affairs of the state, official communication. What should be the correct answer? Its correct answer is option B, judges and magistrate. Next question, question number 34. In respect of judges and magistrate under section 121 of Indian Evidence Act relates to question which a witness cannot be compelled to answer, question which a witness cannot be permitted to answer. Option C, both A and B. Option D, neither A nor B. Privilege in respect of judges and magistrate under section 121 of Indian Evidence Act relates to question which a witness cannot be compelled to answer, question which a witness cannot be permitted to answer. Option C, both A and B. Option D, neither A nor B. Now, let me tell you, basically, this question's correct answer should be option D. Why? Because judges and magistrate के जो statement होते हैं, they are like as a witness, they cannot be called for the reasoning they have derived in a case. So its correct answer should be your option D. Privilege under section 121 of Indian Evidence Act is available to an arbitrator, not available to an arbitrator, may or may not be available to an arbitrator. Arbitrator and both B and C are correct. What should be the correct answer? जल्दी से बताइए. Privilege under section 121 of Indian Evidence Act is available to an arbitrator, not available to an arbitrator, may or may not be available to an arbitrator, and arbitrator, both B and C are correct. So its correct answer is option A, available to an arbitrator. That is it for the day. Rest of the questions we are going to discuss in next class. So please be ready for the next session. We are going to meet up again in the next discussion.